Hello everyone, my name is Surbhi Rathore. I am in Salesforce background and I am been in Salesforce for past 2 years. So first of all, we will start with what exactly is Salesforce is and what are the features of Salesforce, what is the future in Salesforce and why it isn't so boom. क्योंकि nowadays अगर अभी हम लोग सुन रहे हैं कि अभी सेल्सफोर्स चल रहा है तो सेल्सफोर्स का इतना बूम क्यों है, सेल्सफोर्स में क्या फ्यूचर है, सेल्सफोर्स का सैलरी क्राइटेरिया क्या है, तो वी विल कवर एवरीथिंग इन दिस टॉपिक. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विथ कि सेल्सफोर्स कैसा है. तो अगर आप लोगों ने सुना होगा कि यार सेल्सफोर्स में कोडिंग है, सेल्सफोर्स में ये है वो है, हमसे नहीं होगा, तो दिस इज नॉट द पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्सफोर्स इज फॉर एवरीवन. एवरीवन से मतलब है कि सेल्सफोर्स सबके लिए है. इफ यू आर फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ टेक्निकल, इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड, इफ यू आर फ्रॉम अ मैकेनिकल बैकग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, कहीं भी हो आप लोग, फ्रॉम एवरीवेयर, Salesforce is for everyone. It provides everything that needs to run your business. Because nowadays अगर हम सुन रहे हैं अभी कि Salesforce is in demand, Salesforce is in boom, तो this is the right. Why this is happening? Because this is everything it is providing in the cloud format, and it is the number one CRM right now. So what exactly the number one CRM refer here is? So CRM का मतलब होता है Customer Relationship Management. So what is customer relationship management and why it is in number one? Because अगर हम अभी बात करें फिलहाल, तो everything depends on the customer managing, कि how we manage our customers, how we manage the relationship with our customers. तो this all scenarios को साथ में रख के Salesforce ने एक खुद का CRM बेस्ड निकाला है which is Salesforce. जो क्या करता है, जो कस्टमर के डेटा को ट्रैक करता है, उनके रिलेटेड डेटाज कलेक्ट करता है, इंटरैक्ट करता है, उनके साथ कोलैबोरेट करता है इंटरनली एक्सटर्नली. फिर हर जगह ये अभी बूम में हो गया है, लाइक मेल्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और अदर चैनल्स के थ्रू. तो दैट्स व्हाई इट इज द नंबर वन सीआरएम राइट नाउ. इसलिए इसका इतना डिमांड है. अगर अभी हम बात करें कि इसमें भी क्या-क्या लेवल्स हैं। अगर आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सेल्सफोर्स हम करेंगे तो हमारा जॉब लगेगा या नहीं, हमारा जॉब किस लेवल पे लगेगा। बिकॉज़ मैनी ऑफ यू डोंट नो कोडिंग, मैनी ऑफ यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट विथ, तो नो वरी फॉर दैट. व्हाई? बिकॉज़ सेल्सफोर्स हैव मल्टीपल प्रोफाइल्स लाइक सेल्सफोर्स एडमिन, सेल्सफोर्स डेवलपिंग, आर्किटेक्ट, बिजनेस एनालिस्ट, मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर. So if you don't know, like if you are interested in only administrator part, आपको configurations करना पसंद है, आपको coding इतना नहीं करना, तो you will go for admin profile. और admin profile में अगर हम देखें तो average salary is $95K in US. और इंडिया की बात करें तो for admin level it is started from 3 to 4 LPA. And if you go from a developing profile once, so this is the average salary given for each and every profile. So it totally depends on your interest ki whatever position you want to take, whatever your interests are there, so this you will select according to you and your interest. अगर हम लोग अभी क्लासेस करते हैं एंड इफ यू फील कि हम लोगों को आप लोगों में से किसी को कोडिंग में इंटरेस्ट है, किसी को डेवलपर बनना है, किसी को एडमिन में जाना है, तो यू विल चूज एंड उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे. एंड वन मोर थिंग, ये फॉलो करता है नो कोड. तो नो कोड से मतलब हेयर है दैट देयर इज नो कोड. नो कोड मतलब कि लेस कोड है. कोड तो है डेफिनेटली, कोड रहेगा तभी ही इज प्रोवाइडिंग यू द सो मच ऑफ सैलरी एंड गिवन दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज. बट नो कोड मतलब लेस कोडिंग रहता है, मतलब कोड को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं. और यहाँ पे एक लैंग्वेज यूज होता है विच इज एपेक्स लैंग्वेज, एंड इसको बेसिकली हम लोग यहाँ पे जावा बेस्ड बोलते हैं. वाई वी से जावा बेस्ड? बिकॉज ये जावा का ही एक्सटेंडेड वर्जन है एपेक्स लैंग्वेज. नाउ इफ यू सी दी अपॉर्चुनिटीज, तो अगर हम सेल्सफोर्स की बात करें तो मैंने अभी पहले भी बोला कि सेल्सफोर्स इज फॉर एवरीवन एंड सेल्सफोर्स इज एवरीवेयर. एवरीवेयर से मतलब ये है कि ये हर जगह है, मतलब हर कंट्रीज में है आजकल. अगर आप देखेंगे तो इसमें करियर भी काफी अच्छा है. एंड बिफोर गोइंग थ्रू एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स, बिफोर ज्वाइनिंग, यू मस्ट नीड to know what exactly you are going through and you are learning,
राइट. इफ यू आर गोइंग फॉर Salesforce, तो देन उसके बारे में सारा डिटेलिंग आपको पता होना चाहिए पहले से कि why you are doing it, what is the career, what is the salary, which companies are hiring, which big companies are hiring for that, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है. तो दिस यू मस्ट बी क्लियर. तो अगर हम देखें तो ये हर जगह है, मतलब सारी कंट्रीज में है. बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, करियर है, सैलरी नो डाउट अच्छा है इफ यू आर कैपेबल ऑफ दैट. और सारी बिग कंपनीज हायरिंग करती हैं, क्योंकि अगर हम अभी देखेंगे कि सबका डेटा क्लाउड बेस्ड ही है. गूगल की बात करें, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन क्लाउड, राइट. तो और अभी गूगल और सेल्सफोर्स का भी कुछ इंटरलिंक्ड हुआ था, मर्जिंग काइंड ऑफ थिंग्स. सो गूगल इज ऑल्सो, सेल्सफोर्स इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सर्विस टू गूगल. माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो हैव एवरीथिंग इज ऑन गूगल. Now, if you see here, there are different types of Salesforce clouds are there. So depends on your understanding, depends on your interest. You can choose the cloud, whatever you cloud you want to go in. Like sales cloud, service cloud, commerce cloud, multiple clouds are there. Like for e-commerce website, there is commerce cloud there. Marketing cloud handles the marketing related data, like social media handling and this kind of data. App cloud handling the apps. Community cloud. There are multiple services are there which are provided by Salesforce. That's why there are multiple job openings are also there. Now basic, what are the basic clouds are there? The basic clouds are sales cloud, service cloud, marketing cloud, and commerce cloud. Now if you see here, there are objects are there which are used in Salesforce. So basically this is our basic model, like why, what is exactly Salesforce is and why you want to do it. So before uh, going through any kind of training, you must be clear about what exactly Salesforce is. And if we go around this, so there like what there are topics to be covered, like we are covering everything like lightning web component, admin till developing. And in developing too, we are also giving you extra curriculum activities, like for example assignments, real time projects, and other things also provided here. Thank you.